Swedish companies have been present in India for well over 100 years, creating jobs, creating growth, creating friendship. Today, some 300 Swedish companies operate in India, many of them with their own production capabilities. And this relationship is growing as Indian companies also increasingly invest here in Sweden. Actually, slightly more than 10 years ago, I myself, together with my Indian counterpart at the time, we signed the first Sweden-India Social Security Agreement in New Delhi, with the explicit aim to promote corporate and professional ties between our two countries. That might have helped. Today, the 80,000 plus Indian diaspora here in Sweden makes a significant contribution to our economy and our society, not least bringing much needed skills in high-tech sectors across Sweden. The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation, and we expand this cooperation to new areas shaping the future: innovation, emerging technologies, AI, space, and geospatial technology, along with the green transition, of course. As for concrete outcomes of today's meetings, first, we have agreed to launch a joint innovation partnership 2.0 and to set up a joint center for science and technology to connect academic institutions in both countries. Second, we will enhance our political dialogue on security and defense-related matters, including through a dialogue between our country's national security advisors. Third, we launch a third phase of the Leadership Group for Industry Transition, called Lead It, which is proudly co-chaired by Sweden and India. Through Lead It, we will continue to drive this global movement for accelerating the green transition of heavy industry. And fourth, the sky is not the limit for the Sweden-India partnership. Instead, we both share an ambition to scale up our cooperation on space. Your space program has seen some exceptional achievements in the past few years, including the successful lunar landing in 2023. We don't have exactly that ambition yet. But Sweden too is a space nation with unique European capabilities, not least through the S-Range Space Center in the most northern part of Sweden. Actually, the only one on continental European Union soil. S-Range provides international partners with ground network and rocket test services. My government invests heavily in the development of orbital launch capability for defense purposes at S-Range. Our bilateral space cooperation has been ongoing for a long time. India's Space Research Organization and Sweden's National Space Agency have joined forces since the 1980s. Now I see great scope for India and Sweden to pursue enhanced cooperation in this area, and I'm very pleased that our two space organizations have signed an MOU to collaborate on an instrument that will be part of the Venus orbiter mission. So Sweden is proud to be on our way to Venus together with India. On trade, finally, we have a joint ambition to double our bilateral trade and investments within 5 years. With current speed, I actually believe it could become reality even sooner.
The decisive conclusion of the India-EU Free Trade Agreement is largely due to the foresight, the determination and the personal leadership of Prime Minister Modi and President von der Leyen. Thank you both very, very much. Sweden is a pretty small country, but also a pretty big trading nation. Thanks to the two of you, great opportunity lies before us. This deal on free trade is estimated to create some 23,000 new jobs in Sweden, with more than 6,000 of them here in the Gothenburg region. But I regard this free trade agreement not as the end of the road, but the beginning of a new journey. Sweden, together with India and with our European friends, is very committed to make sure this partnership lives up to its true potential. Very finally, in this unpredictable and sometimes dangerous world, the EU and India are partners that promote stability and prosperity. Or as you, President von der Leyen, stated in your landmark address in New Delhi last year, if we get it right, the Europe-India relationship could be one of the defining partnerships of the century. And I very much agree on that. And Prime Minister Modi, I know the year 2047 holds a special meaning in India, since it marks the 100-year anniversary of the birth of the Republic. And you have laid out a clear vision for this occasion. Viksit Bharat. Sweden and the entire European Union will be India's partners on this journey, all the way to 2047 and beyond. Thank you so much. Please. Thank you very much, Prime Minister Kristersson. Dear Ulf, thank you for inviting me to join you here in beautiful Gothenburg, one of the Nordic region's great trading and industrial hubs. And please allow me to join you in extending the warmest of European greetings and welcomes to you, Prime Minister Modi, dear Narendra. It has only been a few months since you hosted me in New Delhi for our groundbreaking EU-India summit. We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to 1/4 of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat. And in doing so, creating jobs and prosperity for our people. There is no time to lose in turning this opportunity in reality. And that's why we are committed to sign the agreement by the end of the year and making it fully operational at record speed. I'm also pleased to announce that we will mark this moment with a large-scale business event for European and Indian companies. And the aim is simple. We want to give business the information and guidance they need to start benefiting from the deal from day one on. But trade is only half of the equation. Our next step must be to deliver an investment agreement. And this is the missing piece of the puzzle in our reinforced economic cooperation, especially in a world where supply chains are being reshaped and economic security challenges us as never before. Deepening our investment ties will help us to de-risk and to diversify. Basically, one can say the trade agreement opened the door. An investment agreement walks us through this door. And from the foundation, member states like Sweden can build stronger bilateral ties with India. Your new strategic partnership you just mentioned, dear Ulf, is proof of this. And this is exactly how it should be. The commitment to double economic exchange between two countries in the next 5 years
That is the ambition that Europe needs. I hope that other member states will follow Sweden's good example. In January, we not only signed the mother of all deals, we also moved closer on security and defense, on which we signed our partnership. And with the first EU-India security and defense dialogue in New Delhi, we continue to deepen the cooperation, particularly on maritime security, where we will hold joint EU-India naval exercises. We will also work together in countering cyber threats, protecting our critical infrastructure, and by generally increasing our information sharing. Our cooperation can help bring stability to an unstable world and provide security to our citizens. Prime Ministers, dear Ulf, dear Narendra, today you have talked about the importance of working together in the emerging technology space. Our EU-India Trade and Technology Council is already showing the way forward. Under its umbrella, we are aligning our AI governance. We're working together on semiconductors. We're strengthening the resilience of our supply chains, and we are ensuring interoperability between our digital systems. We will discuss these topics at the next meeting in July. And as you said, Ulf, we are shooting for the stars as we work to explore new frontiers in our EU-India space dialogue. And again, Sweden is showing the way as the home of mainland Europe's only space base. And India is already shooting for the moon with your successful landing there. Our work together in space will help strengthen not only our security, but of course also our prosperity. All in all, this dynamic new era in EU-India relations opens historic opportunities, and we are determined to seize them. Many thanks. Thank you so much, Ursula. Please, Prime Minister. Your Excellency, Prime Minister Kristersson, Your Excellency Ursula जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टसन से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उर्सुला जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। स्वीडन और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है। फ्रेंड्स, भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एआई, हेल्थ टेक और ग्रीन मोबिलिटी जैसे हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस वर्ष भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में स्वीडन से एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन ने भाग लिया। हम स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, इस पर भी भारत और स्वीडन की सोच में स्ट्रांग कन्वर्जेंस है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी हमारा साझा ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर बल दे रहे हैं। आज हमने इसके तीसरे चरण पर काम करने का निर्णय लिया। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। हम स्वीडन की टेक्नोलॉजी और भारत के स्केल को मिलाकर पूरे विश्व के लिए क्लाइमेट सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। भारत और स्वीडन का आर्कटिक रीजन पर सहयोग वैश्विक क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, उर्सला जी की उपस्थिति आज इस अवसर को और भी विशेष बनाती है। इस वर्ष जनवरी में उनकी भारत यात्रा के दौरान हमने भारत ईयू संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि उन सभी आउटकम्स पर प्रगति हो रही है। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और इनोवेशन में हम मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और यूरोप के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए
भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से भारत स्वीडन और भारत यूरोप की साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हम मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, both of you. Thank you. Thank you. I think we are supposed to go that direction for the flags. I Yes. think so. Yes. Yeah, please. तो तमाम बड़ी बातें